Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with a bunch of topics to discuss. But before starting, I just want to convey you all a message that we are on with the festive season and various discounts are directly under process. So you can avail the discounts in this festive season and also boost up your preparation for your upcoming UPSC or APSC civil services examinations. So, to know about our latest updates, please join the WhatsApp group given in the description link below. Also, do join our Telegram channel for the latest updates and various study materials associated with our day to day analysis. So, now let's start with today's CNA. So the first topic says about multidimensional poverty. तो यहाँ पे बोला गया है कि about 41.5 crore Indians are out of multidimensional poverty since 2005-6, and India by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crore, followed by Nigeria and African continent at rupees 9.6 crore. Okay, at a population, not rupees, at a population of around 9.6 crore. So there were around 9.7 crore poor children in India in this group of 2019 and 2021. तो यहाँ पे बोला गया है about this multidimensional poverty index. So what is it? It is a medium to calculate poverty in all developing countries of the world. What makes MPI, that is the multidimensional poverty index, different is the multidirectional approach it follows for its calculations. So this multidimensional approach is fueled by various indicators that are varying. So the need for a wider array of indicators has been felt as income is very much of insufficient factor to gauge poverty, which is why the MPI is a great step forward. So acknowledging the uses of MPI can be very much envisaged in the society. So today we see about this multidimensional poverty index, which was developed recently by the Oxford Poverty and Human Development Initiatives. So ये दो initiatives है, United Nations Development Programs and Oxford Poverty and Human Development Initiatives, which shows about the incidence of poverty fell from 55.1% in this area to around 16.4% in the era of 2019-21. So today, if you see about the Global Multidimensional Poverty Index, which is released by this organization, and its national counterpart in India is released by the Niti Aayog, namely National Multidimensional Poverty Index. So this National Multidimensional Poverty Index is very much equivalent to the global MPI, which is developed by the Niti Aayog, which uses the robust procedures followed by the Oxford Poverty and the UNDP, that is the United Nations Developmental Program, which determines the multidimensionality of poverty among the Indian masses. So today, if you asked about who releases the global multidimensional poverty index, it is the OPHI as well as UNDP. तो अगर बोला जाए कि how many countries are under this index evaluation, so it is directly evaluating around 109 countries. Or what are the three dimensions of the global MPI? It is health, living standards as well as education. So India का rank क्या है? It is around 66. ठीक है? So what is meaning of the MPI value? So it is the products of the incidence of poverty and the average of the shared deprivations. So यहाँ पे जब मैं health बोलता हूँ about one of the dimensions, तो इस health में दो तरह की एक categories होते हैं. Okay, that are the indicators. तो health के अंदर health एक क्या है? It is a dimension which is directly measuring the MPIs. तो health के अंदर we can see some of the indicators. Health में क्या क्या है? Nutrition and child mortality. फिर दूसरे में आते हैं education. इसमें क्या क्या है? Years of schooling and school attendance. फिर तीसरा है indicators living standards. और यहाँ पे हम लोग का है cooking oil, sanitation, drinking water, electricity, housing and the respective assets. तो ये 10 indicators है which defines the three dimensions of this global multidimensional index. So along with this three dimensions and their further 10 indicators, there is another additional parameters
that gets measured in the MPI, which is the Sustainable Developmental Goals. Because there are today 17 Sustainable Development Goals associated with around 169 targets and 304 indicators. तो आज हम लोग बोल सकते हैं कि एसडीजी हम लोग का 17 है, लेकिन 169 क्या है? टारगेट्स है और 304 इंडिकेटर्स है. तो अगर पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज दिस एसडीजी, तो देयर आर सेट ऑफ यूनिवर्सली एग्रीड गोल्स दैट ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स आर expected to put to use while framing their policies and targets. So these SDGs have been divided according to the dimensions and indicators. Okay, and we could see about the यहाँ पे जैसे SDG 2 मान लो जीरो हंगर, SDG 3 मान लो हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, फिर 1 आपका था नो पॉवर्टी. सो इन सच अ वे वी कुड सी अबाउट दैट हम लोग का जितना भी SDGs है इन सब में कवर अप होता है. ठीक है. सो देयरफॉर अभी जो हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम्स है अबाउट दिस SDGs, which is and this very index which is very much responsible for accessing the poverty on an individual level, तो ये हम लोग को यहाँ पे एक एक्सटेंसिवली कवर करना है बिकॉज इट इज द मेन इंडेक्स विच ग्लोबली रिकॉग्नाइज द पॉवर्टी इंडेक्स अक्रॉस द ग्लोब. तो यहाँ पे आज हम लोग जितने भी हम लोग कमाए हैं इन दिस लास्ट ईयर 10 years, तो बहुत सारे लोगों को हम लोग ने इस पॉवर्टी इंडेक्स से हटाया है, हम लोग ने पॉवर्टी से लोगों को एबल बनाया है. तो थ्रू दिस इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट एज वेल एज द UN is very much trying to make people uplift from the menace of poverty. ठीक है. तो ये एक इंडेक्स था अबाउट दिस MPI. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. वन नेशन वन फर्टिलाइजर. तो रिसेंटली वी कुड सी अबाउट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सो ही वाज ऑन अ 2-day इवेंट where a PM Kisan Samman Sammelan was organized and where he was launching the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urvarak परियोजना. तो ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्या बोला? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, which says about the one nation one fertilizer. तो इन्होंने ये वाला जो स्कीम है इन्होंने लॉन्च किया. ठीक है. So we see about that in the scheme the prime minister will launch the Bharat Urea bags. तो ये देख सकते हो ये वाला बैग है. ठीक है. So Bharat Urea bags launch करेंगे which will help companies market fertilizers under the single brand name which is Bharat. ठीक है. So under the scheme all the fertilizers companies, straight trading entities and fertilizer marketing entities will be even requiring a single Bharat brand for fertilizers and logo under this PMBJP. ठीक है. So all subsidized soil nutrients, urea, diammonium phosphate, ठीक है, muriate of phosphate and even NPK, okay, nitrogen, phosphorus, potassium, so will be marketed under the single name Bharat. And with the launch of the schemes, India will have a common bag design across the country like Bharat Urea, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, फिर भारत DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, फिर भारत MOP, भारत NPK and so on. ठीक है. So this new Bharat brand name and this PMBJP will or logo will cover 2/3 of the front of the fertilizer packet. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2/3 हम लोग का एक लोकेशन कौन कवर अप कर लेता है. So ये logos. So the manufacturing brands can only display their name, logo and other information on the remaining 1/3 space. ठीक है. तो यहाँ पे कहीं मान लो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनका ब्रांड्स वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन 2/3 किस में रहेगा? दिस भारत के ये में कवर अप करेंगे. सो दिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ सिंगल भारत ब्रांड फॉर ऑल दिस सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स बिकॉज there are some 26 fertilizers inclusive of urea on which government bears subsidy and also effectively decides their MRPs. Apart from this subsidizing and deciding at what price companies can sell, the government also decides where they can sell. And this is done through the Fertilizers Movement Control Order of 1973. So now when the government is spending vast sums of money on fertilizer subsidy, so the bill is likely to cross a lakhs crore or thousands crore by the period of around 2022-2023. तो ये estimate किया गया है कि जितना सब्सिडी हम लोग भरेंगे तो it will be around 2 lakh crore. Okay, 1 2 3 4 5 2 lakh crore
का एक हम लोग सब्सिडी लगाएंगे 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर तक. And plus deciding where at what price companies can sell, it would obviously wants to take credit and send that message to farmers कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर रही. So therefore, this scheme was introduced so that the particular category of farmers must meet the nutrient content specifications of the fertilizer control order. And there is no product differentiation amongst the different plants, okay, for each type of fertilizers. जो fertilizers यहाँ पे मिलेंगे भारत यूरिया से, this is no different from the companies that what they are producing. So the concept of one nation, one fertilizer will help farmers overcome their confusion over brand specific choices. As all the fertilizers brands must have 18% and supposedly मैं अगर DAP के बारे में बोलूं, okay, डाइअमोनियम फॉस्फेट, तो यहाँ पे सब कंपनीज को ये टारगेट दिया गया है, ये मैंडेट किया गया है कि आप लोग यहाँ पे 18% नाइट्रोजन यूज करोगे और 46% आप लोग फॉस्फोरस यूज करोगे. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दूसरे कंपनी यहाँ पे 19% और यहाँ पे 45% यूज करेंगे, ऐसा बात नहीं है. तो देयरफॉर यहाँ पे एक लिमिट और एक कैटेगरी बना दिया गया है सो दैट एवरी कंपनीज कुड यूज द सेम अमाउंट ऑफ ब्रांड्स, सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल्स व्हिच इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेकिंग सच नंबर ऑफ यूरिया. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे इसीलिए दिस प्राइम मिनिस्टर we could see about is going forward with the scheme so that India could have a common classification of urea or some of the fertilizers which are tagged under the name of Bharat. ठीक है. तो ये एक न्यूज था अबाउट दिस यूरिया. ओके, नेक्स्ट आता हो इंटरपोल. ओके, सो रिसेंटली वी कुड सी अबाउट दैट इंटरपोल हैज गॉट नो रोल इन कर्बिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. तो यहाँ पे ये इंटरपोल का बात क्यों आ गया यहाँ पे? बिकॉज द 98th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल which will be held between October 18 to October 21. तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? इंडिया में. ठीक है. एंड द मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया आफ्टर 25 years. तो यहाँ पे इसीलिए इंटरपोल का जो सेक्रेटरी जनरल है जुर्गेन टॉक, तो ऑन दिस डे he said that the international police criminal organization, okay, so this organization does not have any role to play some of the state sponsored terrorism, and it because it basically focuses on what? Primarily on ordinary law crimes. ठीक है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि how this could be very much fruitful even in curbing such number of activities which is basically the state sponsored terrorism. ठीक है. तो ये इंटरपोल क्या है? The Interpol जब हम लोग बोलते हैं, it is an international criminal police organization and is an intergovernmental organization which was founded around in 1923. ठीक है. So ये फाउंड किया गया था by the ICPC, International Criminal Police Commission के द्वारा. Okay, and in 1956 this ICPC adopted new constitution and the name changed to Interpol. So today this Interpol is going with some around 195 member countries, which helps police in all of them to work together to make world a safer place. तो इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? लियोन, फ्रांस में. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उसको नाम है ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं GCTR. ठीक है. सो आज अगर मैं इसको बारे में बोलूं अबाउट इंटरपोल, वी कुड नॉट सी दैट दिस डायरेक्टली डील्स विद सम ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. ओके, जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स है, ओके, उनके ऊपर डायरेक्टली हावी होता है. लेकिन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी टेररिज्म को स्प्रेड करवाते हैं, सपोजली इफ आई टॉक अबाउट द ISI, तो इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म. सो देयरफॉर ये उनके ऊपर काम नहीं करते, एक्ट नहीं करते. तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज डायरेक्टली अ लैकुना ऑफ दिस रेस्पेक्टिव इंटरपोल. सो दिस इंटरपोल हैज गॉट इन ईच कंट्री its national central bureau, which provides the central point of contact for the general secretariat and all other NCBs. So this NCB is run by the national police officials and usually sits in the government ministry, which is responsible for policing. So India, though being a member of this Interpol since 1956, India has designated its NCB to the Central Bureau of Investigation, that is the CBI. Okay, तो इसीलिए this Interpol being a member, India being a member of this Interpol since 1956, it plays a crucial role in making all such number of international crimes that is happening within the trespassing some of the respective boundaries.
तो इंटरपोल जब बोलते हैं तो इंटरपोल का जो नोटिस होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं. And its notices are international requests for cooperation or alerts allowing police its member countries to share critical crime related informations. ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल और इंटरपोल नोटिसेस. इट इज द रेड नोटिस. ओके, इट इज ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस. रेड नोटिस में क्या करते हैं? इट सीक्स टू लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ द वांटेड पर्संस. ब्लू नोटिस में कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस आइडेंटिटी. ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्संस हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस. ठीक है, इसके बाद आता है येलो नोटिस टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्संस. ब्लैक नोटिस टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. Orange notice to warn of an event or a person or an object representing a serious and imminent threat to a public safety. फिर आता है पर्पल नोटिस. It is to seek or provide information on the modus operandi used by the criminals. इसके ऊपर भी एक और नोटिस है which can be said as Interpol UN Security Council Special Notice, and it is issued for groups and individuals who are targets of UN Security Council sanctions committees. ठीक है, जस्ट लाइक द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आर बैन बाय द यूएन. ओके, तो ये हम लोग का सम 8 नोटिसेस है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इवन योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो ये हम लोग का टाइप्स ऑफ इंटरपोल नोटिसेस है. क्या क्या था? रेड नोटिस, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल, एज वेल एज द लास्ट वन इज द इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस. ठीक है, तो ये था अबाउट दिस इंटरपोल बिकॉज द 90th जनरल असेंबली इज डायरेक्टली गोइंग टू हेल्प इन इंडिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. हिंदी इंपोजिशंस एंड इट्स डिसकंटेंट. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक टुडे वी कुड सी अबाउट दैट जो हम लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम है अबाउट द हिंदी डिसकंटेंट, ये बेसिकली देखा जाता है कहाँ पे? इन द एरियाज ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, सो दिस हिंदी disposition and the respective report which came around because today we could see that a report in the parliamentary committee which suggested to use Hindi as a medium of instructions in some of the central institutions of higher education and regional language in other states which have ignited controversy. ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्रोटेस्ट कितना ज्यादा हो गया है. ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का साउथ इंडिया में हम लोग को देखने को मिलेगा. ठीक है, so we could see about that at different points in time leaders starting from Jawaharlal Nehru in the mid 1950s, he assured the people of Tamil Nadu that there would be no imposition of Hindi. However, in recent years, be it in national education policy or reports of English signage on national highways in Tamil Nadu getting replaced with Hindi signage, and the political class of the state has overwhelmingly expressed its reservations. If reports in sanctions of the media are an indication, English as a medium of instructions in all technical and non-technical institutions will be permitted only where it is absolutely essential. As the idea is to replace the language gradually with Hindi in those institutions is totally not. तो यहाँ पे अभी जो स्टोरी है so far we could see about that today the country is directly going with the critics of BJP, which directly attempt to go for the imposition of Hindi on some of the non-Hindi speaking people. Even today, you can see that the Chief Minister of Tamil Nadu and Kerala, that is Stalin Sahab and Bijayan Sahab, have voiced their concern over the recommendations. So today, this problem of Hindi is not that कि ये बस आजकल का प्रॉब्लम है बहुत बस मोदी जब से आया है तब से ये शुरू हुआ है. सो सी दिस इज नॉट द वे. ओके, ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि लाइक फ्रॉम द वेरी अर्लियर टाइम्स सच नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैज बीन एमर्ज्ड. ओके, लेकिन अभी यहाँ पे बोला गया है इवन बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज केरला कि यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए टू ऑल द लैंग्वेजेस that are specified under the 8th schedule of the constitution. The Kerala chief minister has even specifically stated that the question papers for competitive examinations should be prepared in all the language, while his Tamil Nadu counterpart has asked the center to promote all languages and keep open the avenues of progress in terms of education, employment equal to seekers for all languages. ठीक है, और अभी जैसे while IITs, IIM, All India Institute of Medical Sciences, okay, which are considered technical institutions, so they all will fall under this respective category of the central institutions. तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन किया गया है कमेटी के द्वारा about the removal of English as one of the language in examinations held for recruitment in the central services,
which also made it mandatory, which also made or suggested about the requisite knowledge of Hindi among the candidates. तो ये basically यहाँ पे नहीं होना चाहिए, because the conditions of going in for the 8th schedule language is very much of emergency, very much of essential if you wants to directly go for such number of things. तो यहाँ पे imposition नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया है, तो ये हम लोग को यहाँ पे बंद करना चाहिए। ऑब्वियसली दिस थिंग्स विल नॉट बी गेटिंग पास्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट निकल के आ रहा है, उभर के आ रहा है, बी इट इन केरला, बी इट इन तमिलनाडु, बी इट इन कर्नाटका, सब जगह धीरे धीरे हम लोग प्रोटेस्ट फील कर रहे हैं। तो द नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स विल ऑब्वियसली नॉट लाइक सच इम्पोजिशन, ठीक है। तो ये हम लोग के डेमोक्रेसी में सुटेबल नहीं होंगे, तो ये केस जाएगा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा बाद में। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट विल देन डिसाइड अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ दिस केस। लेकिन फिलहाल ये डिसकंटेंट जारी है इन सम ऑफ द न्यूक एंड कॉर्नर्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टोकनाइजेशन टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड। तो यहाँ पे लाइक the Reserve Bank of India today has mandated the tokenization of credit or debit card for online merchants from October 1. So ये जो tokenizations है, it refers to the replacement of the actual card details with an alternative code called the token, which shall be very much unique for a combination of card and token requester. Okay, so the RBI says that the tokenized card transactions is considered safer as the actual card details are not shared with the merchant. So यहाँ पे जो tokenization है, okay, which refers to the replacement of the actual card details with the alternative card, which is known as the token, it shall be a unique for combination, and therefore यहाँ पे जो ये होते हैं, लाइक डुप्लीकेसी होते हैं, ठीक है, फ्रॉड्स होते हैं, ये फ्रॉड्स हम लोग बहुत ज्यादा लिमिट कर देंगे। So supposedly why this tokenization is necessary today, because if you see that when you visit a restaurant or even an ATM machine, it is possible for the card thieves to clone your card with a skimmer. That is a gadget that quietly reads the magnetic strip at the back of your card. And similarly, hackers can also break into online websites and mobile apps that store your credit card details. And such data breaches could give con artists access to millions of cards in one go, which are then sold on the dark web. So to help lessen the chances of such frauds, some banks have mandated that the use of an OTP delivered to use registered mobile number to withdraw cash at ATMs. And other banks have enabled the use of their mobile apps to allow cash withdrawal without the physical use of the cards. Also, we could see about that some credit cards issuing banks allow limits that you can set upon yourself per day, per transaction on the bank's app. So this tokenization mandate of the RBI is a similar exercise in caution. So through this tokenization, we could save our respective details, we could save our respective this allocations of our resources so that it does not get sold in the dark way, ठीक है। एंड पीपल्स कैन नॉट डायरेक्टली यूज सच नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बिकॉज आज हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं वो कार्ड्स हम लोग बेसिकली सब जगह स्वाइप कर देते हैं, बी इट इन द पेट्रोल पंप्स, बी इट द शॉप्स, बी इट इन द आउटलेट्स, सब जगह स्वाइप कर देते हैं। तो वहां पे अगर स्कीमर्स लगा रहता है, ओके, इफ वी डू नॉट नो अबाउट द, बिकॉज इट कैन नॉट बी रीड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपना फ्रॉड में हम लोग पढ़ सकते हैं। एंड दिस कुड डायरेक्टली हेल्प आउट द स्कीमर्स टू डायरेक्टली लूट एवरी मनी दैट यू हैव गॉट इन योर कार्ड, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग का एक क्लोन, जो हम लोग का एक फैसिलिटीज है अबाउट टोकनाइजेशन, तो ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ द कार्ड एंड द टोकन रिक्वेस्टर। तो इसी के बेसिस पे वी कुड सी दैट इट इज वेरी मच कंसिडर्ड सेवर इवन बाय द आरबीआई। तो इसी के वजह से वी कैन सी अबाउट दिस टोकनाइजेशन इज डायरेक्टली कमिंग इनटू प्रोमिनेंस इन द कमिंग टाइम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, लास्टली जुडिशियल कमिंग ओवर अरिथमेटिक। तो ये बेसिकली बोला गया है क्या, किसके बारे में, अबाउट द रिकंसिडरेशन ऑफ द लोअर बेंच डिसीजंस एंड इट्स एसोसिएटेड इश्यूज। तो अगर मैं क्रक्स पे बोलूं इसका बात, तो द मैटर ऑफ रिकंसिडरिंग अ रूलिंग ऑफ अ लोअर बेंच शुड बी सीरियसली कंसिडर्ड and the correctness of a judicial decision should be given more importance than the strength of the benches. Okay, so यहाँ पे basically we could see about the issues. क्यों यहाँ पे क्या हो गया है? Because see, a constitutional bench of the Supreme Court has unanimously held that judgment delivered by a larger bench will prevail over the decisions of the smaller bench, irrespective of the number of judges constituting the majority in the larger bench. So the decision of the superior court will always be binding on a lower court, and that decisions of a larger bench will always hold force over a smaller bench of the same court, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक सिस्टम है हम लोग का, लार्जर बेंच और एक छोटा बेंच में, स्मॉलर बेंच में, तो ये एक इशू और एक तसल है, that who can be held superior।
तो अगर लार्जर बेंच में जाना था तो ये छोटा बेंच का फायदा क्या था बैठाने का? Okay, so the cases before the Supreme Court are heard and decided by the benches and the two judges called a division bench, or a bench of three judges, which are called as the full bench. So it is a directly a precedent. Okay, that a bench of equal strength should not reconsider or overrule a decision of a coordinate bench. So today, in this respective arena, we could see that throughout the whole world, supposedly, if I consider about the United States and South Africa, that any reconsideration of the precedent in a matter deliberated by the entire court instead of getting in some of the divisions. तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट शुड डायरेक्टली कंसिडर the term larger bench in the literal sense of merely greater in strength than the lower bench, but should instead aim to have a quorum with a break even for a greater majority than the lower bench. For example, if I say about a 5-judge anonymous decision should be referred to a 9-judge bench instead of 7, so that it would any case be decided by the majority of at least 5 judges. तो यहाँ पे एक तसल है between the smaller judge bench as well as the higher judge bench. तो कहाँ पे? बिकॉज अगर मान लो जैसे हम लोग का रिसेंटली हुआ था अबाउट द हिसाब कंट्रोवर्सी ऑफ, जो हम लोग का हुआ था अबाउट इन कर्नाटका, तो यहाँ पे जो बेंच थे वो 2 जजेस का एक बेंच थे। तो एक ने बोल दिया कि हाँ मैं पक्ष पे हूँ कि हिजाब शुड बी बैन इन द कॉलेजेस, एक बोला था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, इट इज देयर पर्सनल चॉइस। तो ऐसा जो एक तर्क आया था, बस यहाँ पे 2 बेंच थे, 2 जज का बेंच थे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, दिस इशू इज डायरेक्टली नॉट गेटिंग सॉल्व। तो ये सॉल्व नहीं हुआ इशू, ये अभी भी हंग पे है, अभी ये लार्जर बेंच के लिए कंसिडर करेंगे। तो उससे अच्छा यू जस्ट मेक सम ऑफ द लार्जर बेंचेस। तो वहां पे देखो कि अगर 9 लोगों में 5 लोग ने बोल दिया कि हाँ चलो ये ठीक है, इसको बैन होना चाहिए, सो ऑब्वियसली द अदर 4 विल डायरेक्टली से नो। तो इन दैट वे ये हम लोग का एक लार्जर बेंच का सिनेरियो है। तो अगर लार्जर बेंच में ही अगर रेफर करना है तो व्हाई यू आर डायरेक्टली अटेम्प्टिंग और डायरेक्टली अपॉइंटिंग सम ऑफ द 2 जज बेंचेस? तो यहाँ पे वही एक अरिथमेटिक के बारे में बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्मिंग ऑफ दिस बेंचेस टू द लार्जर बेंच वेयर द डिसीजन विल डायरेक्टली प्रिवेल ओवर द स्मॉलर बेंच। तो यहाँ पे जो स्मॉलर बेंच था उसका डिसीजन टोटली नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली द लार्जर बेंचेस का। तो अभी देख लो जैसे हिजाब बैन वाला इशू में रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे 2 लोग थे, इसलिए यहाँ पे उन लोग का चीज को 50-50 करके जो अभी कोई ओपिनियन में नहीं आया है, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट विल बी रेफर टू अ लार्जर बेंच। तो इसीलिए यहाँ पे सुपेरियर कोर्ट के द्वारा वही सब बोला गया है कि हाउ दिस लार्जर बेंच कैन बी मोर बिकेमिंग मोर स्ट्रेंथ, कैसे हम लोग स्ट्रेंथ इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे ये एक एडिटोरियल था, छोटा सा मुद्दा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो वी हैव दिस 5 नंबर ऑफ MCQs. Please attempt these MCQs. You will get the answers in tomorrow's PDF. Also, do join our Telegram channel for the answers of these MCQs. Okay. So we have also opened up a WhatsApp group. So please do join this group for the free study materials as well as some of the free allocations of resources. Okay. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.